Okay. Hello everyone. Welcome to Q Physics Academy. पिछले लगभग 5 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट किया ऐप में। 5 लेक्चर में हम लोग डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस के रिगार्डिंग और 3 डायमेंशनल डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, 1 डायमेंशनल डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन और डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस का प्रॉपर्टीज एज वेल एज स्केलिंग ऑफ द डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस एज वेल एज वॉल्यूम इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन हम लोग डिस्कस किया। उसके साथ साथ हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम्स भी डिस्कशन किया क्लास में और वेरियस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशंस इन डिफरेंट टाइप ऑफ coordinate systems. We are representing the direct delta functions in Cartesian coordinate system, also in spherical polar coordinate system, as well as in the cylindrical polar coordinate system also. Okay, so all the lectures are available in my applications as well as YouTube channels. Please go and watch and complete your class and make your own note and all and build up your own concept. Okay, ठीक है। सो आज का क्लास हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए आज के क्लास में हम लोग जो डिस्कशंस करने वाले हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग बेसिकली डिस्कशंस करने वाले हैं फाइंड आउट द expressions of the volume charge density for a point charge. So आज के क्लास में हम लोग जो बेसिकली डिस्कशंस करने वाले हैं we are find out the volume charge density. Okay, we are trying to find out the volume charge density for a point charge and for an electric dipole as well as for a spherical surface of uniformly spherical surface और जो spherical surface है 3 केस के लिए हम लोग डिस्कशन करने वाले। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, आज का जो एम है हम लोगों का क्लास का जो एम है वी आर फाइंड आउट द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो ऑफ आर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो ऑफ आर। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फाइंड करने वाले फॉर 3 केस। फॉर 3 केस के लिए हम लोग डिस्कशंस करने वाले। फर्स्ट केस फॉर ऑफ ए पॉइंट चार्ज, फॉर ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, फॉर ए पॉइंट चार्ज Q at R dash that is located at R dash from the origins. Okay, सेकेंड केस जो डिस्कशंस हम लोग करने वाले हैं फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, फॉर एन electric dipole or an electric dipole consisting of a point charge minus q। ठीक है, सेकेंडली थर्ड केस में हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं ट्राइंग टू फाइंड आउट द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फॉर ए spherical cell, for spherical cell of radius r and have a total charge plus q। ठीक है, फॉर 3 केस को हम लोग 1 by 1 डिस्कशंस करने वाले हैं। इस 3 केस को हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं आज के क्लास में और कुछ y के लिंक सीरीज का कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोग आज के क्लास में डिस्कशंस करेंगे। सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फॉर ए पॉइंट चार्ज and that point charge is basically located at a particular point at r dash from the origins. Okay, and secondly हम लोग डिस्कशंस करने वाले फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल गिवन है और इलेक्ट्रिक डाइपोल के रिस्पेक्ट में आपको चार्ज डेंसिटी फाइंड करना होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फाइंड करना है। सेकेंडली एक स्फेरिकल सेल है, उसका रेडियस बेसिकली डायमेंशन r है, रेडियस r है और उस वॉल्यूम स्फेरिकल सेल में टोटल चार्ज q बेसिकली इंक्लोज्ड है। आई मीन
total charge of the spherical surface, spherical cell is capital Q. For the given charge distributions, we are trying to find out the volume charge density. For 3 cases, we are discussed here. Okay, so first of all, as you know, the volume charge density का जो expressions होता है, we all know about that. ठीक है, volume charge density, volume charge density, it is denoted by rho of r. In 3 dimension rho r of r, 1 dimension rho of x. That's fine. Okay. अब आपके पास अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन होता है ना, इफ रो ऑफ आर इज गिवन, देन वी आर फाइंड आउट द चार्ज ऑफ द गिवन सिस्टम, देन Q is nothing but equals to rho of r d3r. This is the basic explanations, basic concept. ठीक है, अगर आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन होता तब हम लोग वॉल्यूम चार्ज, इफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज गिवन, then using this volume charge density we are easily find out the total charge enclosed within a given system. But in that case we are trying to find reverse problems. Basically आपके पास एक चार्ज गिवन होगा, इसमें हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं, आपके पास चार्ज गिवन है, ठीक है, we are trying to find out the rho of r. What is the expressions? ठीक है, so okay, हम लोग इस जो इक्वेशन है इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और इक्वेशन 1 के रिस्पेक्ट में हम लोग सारे कुछ डिस्कशंस करने वाले हैं. ओके, ठीक है, तो टेक ए हेडिंग, expressions for volume charge density, expressions for volume charge density rho of r of a point charge. Of a point charge Q at r prime. ठीक है, हम लोग इसको डिस्कशन करने वाले हैं, देखने वाले इसका एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होगा. ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो ऑफ r of a point charge Q located at a r dash. इसका एक्सप्रेशन बेसिकली, as we know, the rho of r is the volume charge density. ठीक है, density. As also we know, the d3r is the distribution functions in 3D, or delta of x is also distribution functions in 1D. ठीक है, इसके बारे में हम लोग पिछले वाला क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कशंस किया. ठीक है, so rho of r basically expressed in Dirac delta function forms. ठीक है, Dirac delta function forms. So it is equals to basically rho of r, it's equals to q, जो चार्ज के लिए हम लोग डिस्कशंस करने वाले, q डेल्टा क्यूब r माइनस r प्राइम. जो चार्ज बेसिकली r प्राइम इज द पोजीशन ऑफ द चार्ज q. ठीक है, पोजीशन ऑफ चार्ज q. अब देखिए, तो आपके पास एक पॉइंट चार्ज गिवन है, यहाँ पे r डैश इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट चार्ज. ठीक है, of the point charge. This is the position vector of the point charge, and q is the magnitude of this charge.
magnitude of the point charge. मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉइंट चार्ज। तो एक पॉइंट चार्ज बेसिकली ओरिजिन से लेके एक पॉइंट चार्ज था, ठीक है, इस पॉइंट में बेसिकली लोकेटेड है, दिस इज द पॉइंट चार्ज। यार बेसिकली एक पॉइंट चार्ज प्रेजेंट है, दैट इज क्यू, ठीक है, दैट इज क्यू, और इसका लोकेशन बेसिकली एट आर डैश में है, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। टू डायमेंशनल एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, टू डायमेंशनल एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई जेड। इस ओरिजिन से बेसिकली इस पॉइंट में आर डैश पॉइंट में बेसिकली दैट चार्ज इज लोकेटेड, and for this for this point charge we are trying to find out the volume charge density. Expressions of this volume charge density is nothing but rho of r, it's equals to charge into Dirac delta functions del q r minus r prime, ठीक है, this is the expressions, please remember। अब देखिए इसको हम लोग रिवर्स कैलकुलेशन करके चेक कर लेते हैं, रिवर्स कैलकुलेशन। सो हम लोग फाइंड करने वाले q, q is nothing but volume integrations rho dv, okay, rho dv। so volume integrations rho is nothing but q delta cube r minus r prime into dv, as q is the constant term, so integrations v volume integrations delta cube r minus r prime into dv, and this is equals to all h1, this term is equals to all h1, this is the volume integrations of Dirac delta functions is equals to 1, okay। as you know the properties of the volume integrations delta cube r dv it's equals to 1, तो पिछले वाला लेक्चर में हम लोग इसके बारे में डिस्कशन किया, दैट इज इक्वल्स टू क्यू। तो आई दैट्स मींस आपके पास एक पॉइंट चार्ज क्यू के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का एक्सप्रेशन बेसिकली होगा क्यू डेल्टा क्यूब आर माइनस आर प्राइम इज द पोजीशंस ऑफ द पॉइंट चार्ज, ठीक है, पोजीशंस ऑफ द पॉइंट चार्ज। सो अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम्स हम लोग एक प्रॉब्लम्स लेते हैं, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग एक प्रॉब्लम डिस्कशंस करने वाले हैं, ठीक है। फ्रॉम द ठीक है, क्वेश्चंस नोट करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर वन, फॉर चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस, for the charge configurations एक चार्ज configurations given in the figure, फिगर में गिवन है, देखिए फिगर क्या है बेसिकली, दैट इज द चार्ज configurations and here basically charge is located q and this is the x prime, it's equals to 0 and this is the point another, this is the x. So for this charge configurations a particular point x, find out the total charge, find out the total charge charge density for the given distributions, find out the find out volume charge density, for these configurations find out volume charge density, ठीक है, this is the questions for these configurations, find out the volume charge density, okay। so volume charge density जो configurations यहाँ पे given था इसका हम लोग solutions देखेंगे, ठीक है। जो वॉल्यूम चार्ज, जो चार्ज बेसिकली दैट इज q located x prime is equals to 0 and this is the point is x. So for these configurations
configurations, the expressions of the volume charge density, rho of x is nothing but q delta x minus x prime, it is equals to q delta x minus 0, that is q delta of x. Okay, so for this configuration, देखिए x prime is located at 0, so that's why the volume charge density का जो expression है basically मिलने वाला है, that is equals to q delta of x. This is the expression of volume charge density. Expression of volume charge density. Okay, this is the expressions of volume charge density. Now we take another configurations. Another configurations, questions 2 मान लीजिए इसको. Another type 2, इसको आप type 2 मान लीजिए. फर्स्ट इच टाइप 1 था, इसको आप टाइप 2 मान लीजिए. आपके पास एक कॉन्फ़िगरेशंस गिवन होगा, इस कॉन्फ़िगरेशंस के रिस्पेक्ट में आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फाइंड करना है. ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फाइंड करना है. दिस इज द वन पॉइंट एंड दिस इज द अनदर पॉइंट एंड दिस इज द पॉइंट इज हियर. दिस इज द पॉइंट x and here is located charge capital Q, x prime is equals to a upon 2, and this is the another point where charge is basically minus q and x prime is equals to basically minus a by 2. Okay, so for these configurations we are trying to find out the volume charge density. ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम लोग फाइंड करने वाले हैं. सो फॉर दिस चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस, volume charge density represented as rho of x prime, जिस पॉइंट बेसिकली चार्ज आर लोकेटेड, इट्स इक्वल्स टू फॉर प्लस क्यू चार्ज, so for plus q charge delta x minus x prime, it's nothing but plus a by 2, so plus a by 2. Okay, plus a by 2 plus minus q charge के रेस्पेक्ट में डेल्टा x minus of a by 2. So that's why that is the volume charge density q delta x minus a by 2 minus q delta x plus a by 2. So this is the volume charge density configurations for the given system. Now take another configuration, that is a type 2, type 3. नेक्स्ट हम लोग टाइप 3 लेने वाले हैं. टाइप 3 आपके पास एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन गिवन है. Here 4 point is basically 0. It is the x. Here charge located is q. Here located 2q, and here located is plus q. Okay. So that point is basically x prime, it's equals to a upon 2, that is the x prime is equals to 0, and that is x prime is equals to minus a by 2. So for these configurations, Dirac delta functions represent the charge configuration. Volume charge density can be represented as volume charge density
represented as rho of x, it is equals to, for plus q charge, for plus q delta x minus a by 2, again plus q for this charge q delta x plus a by 2, then minus 2q delta x minus 0. Okay, so this is the volume charge density expressions. If so देखिए आपके पास एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन गिवन था, उस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को यूज करके we are basically find out the volume charge density. Now using this volume charge density, we are easily find out the total charge of the given system, dipole moment of the given system, ठीक है, dipole moment of the given system and quadrupole moment of the given system, as well as many kind of terms we are basically find out here. ठीक है, so let's take and problems. Let us take find out and problems. Let us for type 3. For type 3, we are trying to find out the dipole moment of the given system. Okay. First of all, what is the expressions of dipole moment as well as the total charge q as well as the volume charge density के respect में हम लोग किसी तरह volume charge density का expressions use करके we are basically how to find out a dipole moment as well as the total charge of the given system. That's are very important. So now trying to find out another expressions, another case, volume charge density. Volume charge density of an electric dipole ठीक है, हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करने वाले हैं फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. So the expressions of this इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स एक सिस्टम है, ओके, एक सिस्टम है, दैट इज द लोकेशंस x equals to 0, x prime equals to 0, that is located plus charge और माइनस चार्ज, कुछ भी हो सकता है. सो बेसिकली डाइपोल मोमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल होता है, हम लोग इसको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेते हैं. कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में इसको डिफाइन करने वाले हैं. इट इज इजी होने वाला है. इट इज एक्स एक्सिस, इट इज वाई एक्सिस. So this is the point x equals to 0 origin and this is the point x equals to a. Okay, and in the origins is minus charge is present and plus q charge is presented at x equals to a. So this is the, and there is some distance a. This is the representations of dipole moment. For this dipole moment we are trying to find out the charge density. So charge density is rho of x is nothing but plus q delta x minus a minus q delta x. ठीक है, minus q delta x, as well as the 3-dimension case q delta cube r minus something and for minus q delta q of r. This is the case. So this is the 1-dimension case representations, 1D case. So don't worry. So हम लोग डाइपोल मोमेंट के लिए भी हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस फाइंड करना सीखा. ठीक है, सो आपके पास नेक्स्ट जो केस आने वाला है, नेक्स्ट जो केस बेसिकली आने वाला है, नेक्स्ट केस को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, एक सेकेंड. नेक्स्ट केस
व्हाट इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लिखिए हेडिंग डालिए, व्हाट इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, okay, what is the volume charge density of a uniform infinitesimal spherical cell, thin spherical cell, okay, thin spherical cell, एक infinitesimal thin spherical cell है of radius capital R and total charge capital Q centered at the origins, at the origins के लिए आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का एक्सप्रेशन लिखना होगा। एक थिन स्फेरिकल सेल है, एक थिन स्फेरिकल सेल, ठीक है, और थिन स्फेरिकल सेल का रेडियस बेसिकली आर है और टोटल चार्ज क्यू इज सेंटर ऑफ एट द ओरिजिन। जो चार्ज है बेसिकली थिन स्फेरिकल सेल का सेंटर में बेसिकली प्रेजेंट एट आर इक्वल्स टू 0, ओके, एट आर इक्वल्स टू 0। सो व्हाट इज द expressions of what is the expressions of volume charge density? This is the thin spherical cells. That is the very tricky problems. Okay, please remember that's also important problems and tricky problems. देखिए एक थिन स्फेरिकल सेल है और इसका सेंटर में कैपिटल चार्ज है। As we know the properties of thin spherical cells, if we placed a charge at the origins, that charge not instantly located at that point, that charge are basically distributed uniformly in the spherical surface, in the ring. So the properties of thin spherical cell is if a charge is given to a thin spherical cell at the center, then that charge is uniformly distributed over the surface. So what is the properties? हम लोग एक properties को यूज करने वाले हैं of thin spherical cell के एक properties है। तो for thin spherical cell, okay, or thin spherical cell, if we put a charge, capital Q at the center, then this charge, then this charge is uniformly distributed to over the entire surface, of thin spherical cell, of thin spherical cells, okay। That means आपने क्या किया, this is the radius r, this is the center, आपने क्या किया फर्स्ट केस में कैपिटल क्यू चार्ज सेंटर में पुट किया, then what happened, this charge is distributed, over the entire surface। पॉजिटिव चार्ज था इसीलिए पॉजिटिव चार्ज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ओके, पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रेडियस है।
Please remember the concept. That means charge are uniformly distributed in the surface of the over the surface of the sphere, over the surface of the thin spherical cell. Sorry, अपने एक चार्ज को सेंटर में पुट किया और दैट चार्ज इज uniformly distributed over the surface of thin spherical cells. So it means the charge is basically these distributions are basically distributed. This charge is basically distributed over the entire surface. Okay, so for the given configurations, we're trying to find out the charge density. Okay, so that now the charge density for the given expressions, please remember rho of r, it's equals to rho of r equals to a delta r minus r. Here a is this some constant. We are trying to find out the constant. A is some constant. Okay, a is some constant. Now we are trying to find out this constant. This is the expressions of वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. अब हम लोग ए का वैल्यू फाइंड करेंगे और इस इक्वेशन में हम लोग पुट करने वाले हैं. दिस इज द इक्वेशन 2. ठीक है, एज इक्वेशन से हम लोग ए का वैल्यू हम लोग फाइंड करने वाले हैं और इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने वाले हैं. ठीक है, चलिए अच्छे से नोट करिए. सो एज यू नो द टोटल चार्ज Q is nothing but volume integrations rho dV. Okay, rho dV. So rho is nothing but a delta Q, delta r minus capital R, and it is equals to dV. dV is nothing but 4 pi r square dr. As is thin spherical cell, let us consider thin spherical cells. ठीक है, और इसका लिमिट बेसिकली r का लिमिट 0 से लेके r तक है. So a is constant, 4 pi a is the constant. So 4 pi a is the constant, and the integrations is 0 to r square delta r minus r into dr. Now r equals to r is basically present within the volume surface. So r equals to r, the point located in the integral limit, so we can use the properties of Dirac delta functions. We use limit, we use properties of Dirac delta functions. Properties of Dirac delta functions. Okay, so after using the properties of Dirac delta functions, so it is equals to basically 4 pi a capital R square. So it is equals to 4 pi a r square. So now a is equals to, तो आपको जो expressions मिला basically 4 pi a r square. So a is equals to capital Q upon 4 pi r square. So this is the given value. Now put in equation 2. Now put in equation 2. We are trying to find out the volume charge density. We get volume charge density for thin spherical cell. Okay, for thin spherical cell, it is equals to basically rho of r, it's equals to Q upon 4 pi r square, Q upon 4 pi r square delta r minus r, where r is the radius of the thin spherical surface. Please remember, r is the radius
of the thin spherical cells. Okay, fine. So in this way, for the three case, for the point charge, or for dipole moment, or any system of charge, as well as for thin spherical cells, we are find out the density of the charge distributions, and these are the expressions of this distribution, density of this charge distributions. Okay, so this is the very important and conceptual concept of volume charge density. Okay, volume charge density. Now we are trying to find out a very famous and conceptual problem that is based on basically Dirac delta function. Okay, that is based on basically Dirac delta functions. Now we're trying to find out. Okay, this is the very famous problems. Question number. Some questions. So आपके पास एक चार्ज डेंसिटी का representation, graphical view is given. The graphical view, the variations of charge density, variation of charge density with respect to this positions vector r, with positions vector r, which given below, which given below. The graphical view is as like it. This is the row of r, this is the r. The graphical views are as like it. Point. Also, the graphical view. For this graphical view, for this graphical representations of the charge density, find out the total charge of the given system. Find out the total charge of the given system. Total charge of the given system. Okay. Options are basically option A is 0. Options B pi epsilon 0 A is arbitrary constant
pi epsilon 0, option C 4 pi epsilon 0, option D pi epsilon 0 upon 2. ओके, pi epsilon 0 upon 2. सो इसका जो सॉल्यूशंस हम लोग देखने वाले हैं, सोचिए थोड़ा सा, जो ग्राफिकल व्यू था उस ग्राफिकल व्यू को अच्छे से समझिए। आपके पास एक ग्राफिकल व्यू इस तरह का था और इस तरह का था, ठीक है, ग्राफिकल व्यू इस तरह का था, and that point is, this is the direct axis represented density of r, rho of r, and this is the position vector. So for this graphical view, the charge density expressions is nothing but rho of r is equals to basically for the vertical variations it's equals to four pi epsilon naught delta r, something is constant delta of r, minus for the this is the first variation and this is the second kind of variations. For second kind of variations it is equals to epsilon upon r square, epsilon upon r square e to the power minus b of r. Okay, e to the power minus b of r. So for this charge distributions, we are trying to find out the total charge of the given system. So आपके पास basically जो charge distributions given था, it is equals to epsilon 0 minus epsilon 0 upon r square e to the power minus b e to the power minus b e to the power minus r, not a b of r, e to the power minus r plus 4 pi epsilon naught delta of r. So for the given charge distributions, we are trying to find out the total charge enclosed within the system. So Q is equals to basically rho of r into dv. Okay, rho of r into dv in all space, for all space, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, ऐसा ही तो है, ठीक है। अब देखिए जो वेरिएशंस है बेसिकली, फर्स्ट जो एप्सिलॉन 0 स्क्वायर e टू दी पावर r वाला जो चार्ज डेंसिटी का वेरिएशन है, दैट इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, राइट, फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, एंड 4 pi epsilon 0 delta r वाला पार्ट्स, this is vary from minus infinity to plus infinity from the graphical view, ठीक है, from the graphical view. So it is equals to basically minus 0 से लेके infinity epsilon 0 e to the power minus r upon r square into dv plus माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी 4 pi epsilon naught डेल्टा r dv, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने वाले हैं, दैट इज इक्वल्स टू माइनस एप्सिलॉन नॉट माइनस 0 से लेके इंफिनिटी एप्सिलॉन नॉट अपॉन e to the power minus r upon r square, and dv is nothing but 4 pi r square dr, 4 pi r square dr plus this is minus infinity to plus infinity 4 pi epsilon 0 delta r dv. Okay, that's fine. Now we simplify these expressions.
Now we simplify these expressions. Q is equals to minus 0 to infinity epsilon 0 e to the power r square upon r square upon r square. Okay, r square upon r square 4 pi into dr प्लस माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा dv. Okay, so the first integration is equals to basically minus 4 pi epsilon naught e to the power minus r limit 0 to infinity plus 4 pi epsilon naught minus infinity से लेके plus infinity delta dv, and that part is equals to 1. That part is equals to 1. Okay, so that is equals to minus 4 pi epsilon naught. It is equals to e to the power minus infinity minus e to the power 0. Okay, e to the power minus infinity minus e to the power 0 plus 4 pi epsilon naught into 1. Okay, so the overall charge is q equals to basically minus 4 pi epsilon naught e to the power minus infinity e to the power minus infinity. It means एक माइनस भी था ना पहले से, एक माइनस भी था पहले से, हाँ यहाँ पे एक -1 वाला पार्ट होगा, राइट, थोड़ा सा मिस्टेक किया हम लोगों ने. सो माइनस माइनस एक दूसरे से बेसिकली कैंसिल आउट किया, दैट इज प्लस, ऑलरेडी प्लस. सो e to the power माइनस इन्फिनिटी माइनस 0 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 upon e to the power infinity 1 upon e to the power infinity minus 1. Okay, plus 4 pi epsilon naught 1 upon e to the power infinity, that means 1 upon infinity 4 pi epsilon 1 upon infinity minus 1 plus 4 pi epsilon naught 1 upon infinity means 0, so that means equals to, it is equals to 4 pi epsilon naught plus 4 pi epsilon naught, and this is cancel each other, and overall charge is basically 0. So please carefully do the calculations. Each calculations part is very important. आपको अच्छे से हर एक कैलकुलेशंस को देखना होगा. देखिए हम लोग कैसे डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस का प्रॉपर्टीज भी हम लोग यहाँ पे यूज किया, ठीक है. डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस का प्रॉपर्टी यूज करके इस तरह क्वेश्चंस को हम लोग बेसिकली यहाँ पे सॉल्व किया. ओके, this is the direct delta functions problems of the given equations. अब देखिए आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है फॉर ए गिवन सिस्टम फॉर ए पॉइंट चार्ज, for a point charge q. Electric field is given as E vector of r, it's equals to q upon 4 pi epsilon naught upon r square e r cap, that means r cap. Okay, so now trying to find out what is the value of divergence of E of r for the given system. Option A
0. ऑप्शन बी Q upon epsilon naught. Option C Q upon epsilon naught delta R. Option D only delta R. So what is the expressions for the given problems? So आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ठीक है, आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको डाइवर्जेंस फ्रॉम बेसिकली फाइंड करना है. ओके, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस फ्रॉम आपको बेसिकली फाइंड करना है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर E r कैप. चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. तो इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशंस को देख लेते हैं. आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है E of r, it's equals to basically Q upon 4 pi epsilon naught into r square E r cap. So it is equals to basically Q upon 4 pi epsilon naught r cap upon r square. Okay, now we're trying to find out the divergence of the given electric field. Divergence of the given electric field, it is equals to divergence of U upon 4 pi epsilon naught r cap upon r squares. Now it is equals to Q upon 4 pi epsilon naught, Q upon 4 pi epsilon naught divergence of r cap upon r squares. Now using the property divergence of this properties of the Dirac delta functions, what is the divergence of r cap upon r square, which is basically related to the Dirac delta functions. It's a properties. So we can use the properties of Dirac delta functions. So Q upon 4 pi epsilon naught into 4 pi delta Q bar और delta r, that's fine. अब देखिए 4 pi एक दूसरे से बेसिकली कैंसिल आउट कर रहा है. सो आपके पास जो डाइवर्जेंस ऑफ E का जो एक्सप्रेशन बेसिकली मिला, दैट इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डेल्टा ऑफ r. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. आप नोट करिए अच्छे से, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, तो हम लोग डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस के रिगार्डिंग जितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था डिपेंडजे ग्रिफिथ और वाई के लिंक में, उस प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व किया. और ऑल्सो हम लोग कैसे एक पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में डेंसिटी ऑफ चार्ज हम लोग फाइंड कर सकते थे, उसको हम लोग भी डिस्कशंस किया. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रॉब्लम्स ऑल्सो. ऑल्सो आपके पास एक पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड था और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस फ्रॉम भी हम लोग फाइंड किया. सो दैट इज इक्वल्स टू बेसिकली डाइवर्जेंस ऑफ E इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट डेल्टा ऑफ R. Please remember the concept. Divergence of E is equals to Q upon epsilon naught. And now आपके पास देखिए ये जो एक्सप्रेशंस मिला, ठीक है, इस एक्सप्रेशंस इज आल्सो डाइवर्जेंस ऑफ E समान आपको मिला बेसिकली Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट डेल्टा ऑफ R. अब देखिए ये जो Q इंटू डेल्टा ऑफ R into epsilon naught, Q into delta of R, it's nothing but the density rho of R is equals to epsilon naught. So this is the another expressions of this given form. So आपके पास देखिए, आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था, E of R बेसिकली गिवन था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप. यहाँ से आपको इसका डाइवर्जेंस बेसिकली फाइंड करने के लिए बोला.
divergence is basically q delta of r upon epsilon naught, or this is equals to divergence of E equals to basically rho of r upon epsilon naught. These two are the very important for exam purpose, very important, please remember. ठीक है, आपके पास इसी तरह ऑप्शंस भी आपको गिवन हो सकता है क्वेश्चंस में। तो आपके पास q डेल्टा ऑफ r, इसको छोड़ के आपको रो r बाई एप्सिलॉन नॉट दे दिया, और आपको ये सोचने लगे रो कहाँ से आ गया, बट रो इस फॉर्म से आया है बेसिकली, तो उसको याद रखिए। सो बेसिकली यहाँ पे रो ऑफ r इज इक्वल्स टू q ऑफ डेल्टा ऑफ r बेसिकली, है रो ऑफ r इक्वल्स टू q ऑफ डेल्टा ऑफ r। इसके बारे में हम लोग और भी डिटेल्स पिछले आज का लेक्चर में हम लोग डिस्कशन किया, ठीक है। तो इसी तरह कॉन्सेप्ट को हम लोग और भी आगे यूज करने वाले हैं बहुत सारा प्रॉब्लम में, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डीप कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, उस टाइम हम लोग इसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। ओके, नोट करिए, यहाँ तक अच्छे से नोट करिए। तो हम लोगों ने डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस के रिगार्डिंग जितना सारा प्रॉब्लम डेविड जी ग्रिफिथ में था, सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने हर एक लेक्चर में डिस्कशंस किए, और हर एक लेक्चर को आप लोग अच्छे से नोट करिए। और आप लोग हो सके तो आपका जो डेविड जी ग्रिफिथ का जो बुक्स है उसको आप स्टडी टेबल के पास में उसको ओपन करके रखिए, और थोड़ा थोड़ा बुक को भी आप फॉलो करिए, ठीक है। हम लोग बेसिकली जो लेक्चर सीरीज है, इस लेक्चर सीरीज में हम लोग डेविड जी ग्रिफिथ का जो बुक्स, डेविड जी ग्रिफिथ का बुक हम लोग कंप्लीटली फॉलो कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। इस बुक को हम लोग एकदम पूरा पढ़ेंगे, जो IIT-JAM, CSIR-NET, गेट, जेस्ट, TIFR, जितना सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह है, उस एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो इसीलिए इस लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए आप इस किताब को भी साथ साथ पढ़िए अच्छे से, जो आपको आपका जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को और भी डिटेल्सली इंक्रीज करने वाला है, ठीक है। सो मेरे लेक्चर को देखिए, उसके साथ साथ आप कॉपी को आपका जो बुक्स है उस बुक को ओपन करिए, ओपन करके उस पर्टिकुलर थ्योरी को आप थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिए एक बार, देन आपका कंसेप्ट धीरे तगड़ा हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। सो आज का क्लास बेसिकली यहाँ तक हम लोग स्टडी किया बहुत अच्छे से, एक एक प्रॉब्लम्स हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कशंस किया यहाँ पे, दैट्स आर इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स। सो देखिए, रो ऑफ आर इट्स नथिंग बट बेसिकली क्यू ऑफ डेल्टा ऑफ आर, ठीक है। इसी तरह बहुत सारा प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं, ठीक है। दैट्स ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिकली एक डेविड जी ग्रिफिथ का जो जितना सारा डाइवर्जेंस कर्ल्स और ग्रेडियंट और डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस के रिगार्डिंग जितना सारा प्रॉब्लम्स है, सारे प्रॉब्लम्स हम लोग बेसिकली एक लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जो इसीलिए आप लोग प्लीज कॉपी को ओपन करके रखिए, और अपने जो बुक्स है वो भी ओपन करके रखिए लेक्चर देखने के टाइम, और साथ ही साथ मेरे साथ हर एक प्रॉब्लम को आप लोग नोट करिए, ठीक है। सो पिछले वाला लेक्चर में हम लोग जो डेविड जी ग्रिफिथ का जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, डेविड जी ग्रिफिथ का जो प्रॉब्लम्स है वेक्टर एनालिसिस के लिए फर्स्ट चैप्टर में, हम लोग बेसिकली आज का क्लास में फर्स्ट चैप्टर को हम लोग बेसिकली कंप्लीट किया, ठीक है। हम लोग बेसिकली फर्स्ट चैप्टर को हम लोग कंप्लीट किया, कंप्लीट चैप्टर 1, चैप्टर 1 को हम लोग कंप्लीट किया। डेविड जी ग्रिफिथ का जो बुक्स है उस बुक का चैप्टर 1 हम लोग बेसिकली कंप्लीट किया।
ओके, लेक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशंस। ओके, आज के लिए आज का क्लास हम लोग यहाँ पे स्टॉप करने वाले हैं। नेक्स्ट दिन हम लोग इसके ऊपर जितना सारा प्रॉब्लम्स बचा हुआ है सारे प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, जो आपको प्रिपरेशंस में बहुत ही हेल्प होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।